Bachan Anmol, the precious word or branches. The Bachan means it, word. Bachan means word. Anmol means precious. Anmol is a precious. This precious word, that means that this is a words or says given by the elder peoples, the true essence of their experience. So this is a lesson of inspirations. Prerna means inspiration from the former president Dr. Abdul Kalam says and words, golden words. एक साधारण और निर्धन परिवार में जन्म लेने वाला तुम का पक्का बालक अपनी सच्चाई और ईमानदारी से मुसलमान बनकर आकाश पर चांद बनकर टिमटिमा सकता है. The ordinary person, the poor family's background child, the well-tuned child can become a Musalman on the skies, twinkled skies by his truth and kindness. Truth and kindness. Sachai means truth, ईमानदारी, kindness. आने वाले पीढ़ियों उनकी सादगी और विनम्रता से प्रेरित तो होंगे. The future generations, पीढ़ियों means generation. The future generation may inspired by his humbleness and truth. Humbleness and simplicity. सादगी means simplicity. विनम्रता, kindness or humbleness may inspire. The future generation may inspired by his humbleness and simplicities. उनके गहरे ज्ञान और अनुभव के प्रकाश से भी लाभान्वित होंगे. And they may benefited by their deep knowledge and experience. So let's come to the essence of his says. फर्स्ट वन, देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लास के आखिरी बेंच पर भी मिल सकता है. He says the good knowledgeable mind or brain, the good brain may be found in that last desk of the class. सेकंड वन, जब तक आप सफलता का सम्मान नहीं कर लेते तब तक सफलता का महत्व नहीं समझ सकता है. How long you not respect the failures, then you not able to understand the importance of success. महत्व, importance, सामना, respect, सफलता, failure, सफलता, सक्सेस, असफलता, फेलियर. सफलता केवल संदेश देती है कि जबकि असफलता से सफल होने का मार्ग प्रशस्त होते हैं. सफलता is just give that intimation, signals. संदेश means intimation, signal. It give only the signals. Then when the success, when the failures, so the root of the success. मार्ग means root or path. जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप कामयाब हैं. Which days your signature become the autograph, then you may understand that you are successful. कामयाब, successful. You are become a successful. यदि आने वाले भविष्य को सुनहरा बनना है तो वर्तमान में बहुत कुछ छोड़ना अर्थात त्याग करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा. In case if you want to build a golden future, सुंदरा means golden, भविष्य future. If you want to make a golden futures, then you have to give, you have to lose in present. That means you have to sacrifice some things present. वर्तमान, present, छोड़ना, leave, त्याग करना means sacrifice. अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सबसे पहले आपको सूर्य की तरह जलना भी होगा. If you want to shine as a sun, then you first be burning as a sun. First you be burning as a sun. चमकना, shine, चलना, burn और fire. आपके विचार आपका धन है और कड़ी मेहनत हर समस्या का समाधान है. Your thoughts are your wealth. Dhan means wealth. Your thoughts, which means thought. Your thoughts are wealth. And then hard work. Hard work is the equalities or respect of that. Every problems, हर समस्या का समाधान है. और कड़ी मेहनत. Hard work is the
is the sacrifice or console of the every problems. Samasya means problem. It meaning samadhan means solution. Hal, kritim, artificial. Ki apeksha as compared to, as against it. Upalabdhi, achievements or availabilities, tatpar, ready, sadat, constantly, always, pratibha, talent, amulya, invaluable, precious, vastavik, asali, actual, reality. So now come to that question answer. सबसे अच्छे दिमाग से लेखक का क्या अभिप्राय हो सकता है? What the opinions में the writers, what the opinions में writers have about the सबसे अच्छे दिमाग, the great brain. सबसे अच्छा दिमाग से लेखक का क्या अभिप्राय हो सकता है? सबसे अच्छे दिमाग से लेखक का अभिप्राय उस दिमाग से है जो योग्य और चिंतन करने में सक्षम है, which brain have the above, have capable of ability, capable of the thinking, thoughting and the qualities, and quality and thinking. That's next short answer questions. असफलता के द्वार कैसे खोल देती है? How the success, how the failure open the success, how the failure open the success, entrance of the success. जब तक हम सफलता का सामना नहीं कर लेते हैं, हमें सफलता का महत्व समझ नहीं आता है. How long we not respect the success, then असफलता. जब तक हम असफलता का सामना नहीं कर लेते हैं, सफलता not असफलता. How long we not respect the failures and we not able to understand the importance of success. अपने असफलताओं से सीखकर तथा कमियों को ढूंढकर उस पर काम करने से सफलता का द्वार खुल जाते हैं. So अपनी असफलताओं को सीखकर you learn from your failures and then you find out your demerits. Then you take over the work, then you work out, then it's open your success, entrance of success. स्वयं को सूर्य की तरह सकारात्मक कैसे किया जा सकता है? How you burn like it, how yourself you burn like a sun. स्वयं को बाधाएं और कठिनाइयों की आग में दाबकर कि स्वयं को सूर्य के समान सकारात्मक बनाया जा सकता है. That means you burned yourself from the difficulties and hard struggles and difficulties. बाधाएं, struggles and difficulties, कठिनाइयां, difficulties. So you push up from your difficulties, your own difficulties and struggles. Then you can become the equal, you become like a sun. आखिरी बेंच से लेखक का संकेत किस ओर है? The last bench. The intimation of the writers is towards the last bench. आखिरी बेंच से लेखक के संकेत कक्षा में पीछे पर बैठने वाला उन छात्रों है जो पढ़ाई में विशेष ध्यान नहीं देते. This आखिरी bench, the last desk, the writer denote the last desk is the person, the child. These are the synonyms of Surya, sun. Next, दुनिया, world, we can say भूलोक, धरती, पृथ्वी, जगत, संस्कार. These all. दुनिया, I am doing here. I have to write one more times here. दुनिया. So instead of these dunyas, you can write dharti, prithvi, भूलोक. Any words you write here. Marga means path or way. Marga we say rasta, path, marga, rag, sadak, road, pant, pagandi, pagdandi, path, trespass. The pagdandi. These are all the synonyms for the mark, path.